Yes, this is better. Hello guys, what's up? What's going on? आज का लाइव थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हम कर रहे हैं शार्क टैंक स्पेशल. So आज basically instead of the regular programming, we are basically going to do the funding news. There is one top story which we want to really cover, which is around the whole PTM thing. जिसके लिए आज स्पेशली हमने आकाश को भी बुलाया है. और इसके अलावा ज़्यादातर के उसके अलावा हम बेसिकली वी विल गो थ्रू ऑल द डिफरेंट शार्क टैंक डील्स व्हिच हैव हैपेंड दिस वीक एंड टिल द टाइम शार्क टैंक इज गोइंग ऑन द शार्क टैंक सेक्शन इज गोइंग टू बी अ रेगुलर सेक्शन इन द वीकली लाइव्स. सो बेसिकली ट्यून इन करते रहो यार हर हफ्ते एंड वी विल गिव यू ऑसम एनालिसिस of how of whether the sharks made the right choice or not and what do our people in the panel think about it. Just give me a second, I just need to shoot this and okay. Okay. So, I think as people will start joining in, मेरे को ये वाला यहाँ पे बस कर लेने दीजिए, 2 मिनट लगेगा. Yes. Okay. I think I've posted everywhere. अभी जहाँ से लोग आएंगे just this is one, this is gone. Okay, cool. I think we are good to go. So before we start, as usual, thanks a lot, guys, for joining in. Thanks a lot to the whole TBC Live regulars team who have actually been taking an hour out every week for becoming a part of this session. And thanks to all of you guys for tuning in and watching what we have to say about the startup news of the week. I'll just share my screen, which is my usual way, and we are going to kick it off from here. Just hold on. Okay, so for all of you guys who don't know, this is the Builders Club. We basically are one of the largest startup founder communities globally. We do this event on a week-on-week basis where we get investors and founders from our community to come and critique what has happened in the startup ecosystem this week. और आज ज़्यादातर footage हम दे रहे हैं Shark Tank को for the sole reason that, well, it is one of the defining or flagship events in the startup ecosystem in the mainstream media as well. तो सारी की सारी मेन स्ट्रीम स्पॉटलाइट्स जो है वो शार्क टैंक की तरफ जाती हैं और इसीलिए हमने भी सोचा कि यार if the sharks can make the deal, then what do our sharks in our panel think about it? Let's get to know. Thoda sa about the club, in case you people are looking to raise funds and in case you people are building anything in any city in India, please become a part of the club. The club is going to be very beneficial for you, both in terms of guidance and in terms of tools and resources. And we continue to create a lot of content around the startup ecosystem. So follow us on all social media as well. With that, छोटा सा वीकली स्टार्टअप लाइफ का हमारा टेबल ऑफ इवेंट फ्लो होता है. हम स्टार्टअप न्यूज से चालू करते हैं, फिर हमारा एक बुक रिकमेंडेशन होता है, एंड देन वी डू अ स्मॉल गिव अवे. सो लेट्स जस्ट किक इट ऑफ विद द स्टार्टअप न्यूज. सबसे पहले तो फंडिंग न्यूज द यूजुअल. सो इस हफ्ते $250 million ऑफ फंडिंग हैपेंड, out of which the growth stage funding was 162 million and the early stage funding was 87 million. Of this, 5 deals happened in the growth stage, 10 deals happened in the early stage, and 6 deals were undisclosed. Amongst the ones which have raised funds, there is Vivify, which is an Hyderabad-based NBFC. They raised $75 million. There is AI Dash,
which is enterprise SaaS AI solution provider for $50 million. There is Namdev Finvest, they raised $15 million. Infra.market, which is a construction solutions firm, they raised 20 million. And then there is Vikran Engineering, which is procurement and construction company. They raised $10 million. गुलमणि मैं आपसे थोड़ा सवाल पूछूंगा थोड़ी देर बाद इसमें मेरा एक सवाल है अर्ली स्टेज में चलते हैं कृत्रिम दिस इज द न्यूज एआई the first AI unicorn from India, backed by from the brainchild of Bhavesh Agarwal. They raised $50 million और एक झटके में वो सब मतलब I guess this is the third fastest unicorn in India. Then there is EcoFi. They raised NBFC. They're an NBFC. They raised $10.83 million. There is Scope. Scope is a networking platform to connect startups, investors, and industry experts. Hmm. और ऐसी ऐसी और कौन सी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना है सो दे रेज $6 million और इनका एक वीसी फंड भी है जो कि $45 million है और डॉलर्स का इन्होंने फंड भी बनाया है तो दे आर डूइंग प्रीटी वेल आई थिंक $6 million ये अपनी आई बैंकिंग सर्विसेज को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं देन देर इज न्यू मी दे आर अ जेन जी फोकस्ड फास्ट फैशन D2C ब्रांड $5.4 million. Raga AI 4.7 million. Then there is Convenio, which is the brainchild of Swiggy ex-executive. He this raised $3 million, and then there is Stan, which is in the gaming space, which raised $2.7 million. Gulmani sir, कंस्ट्रक्शन में इतना पैसा क्यों जा रहा है सडनली इंफ्रा मार्केट को भी पैसा मिल रहा है विक्रांत को भी पैसा मिल रहा है सारे ग्रोथ स्टेज डील्स हो रही हैं व्हाट्स द स्कूप कुछ है क्या विच वी हैव मिस्ड think there are already, bunch of players who have been doing a wonderful job. Basically, I think it's a marketplace play. I'm not sure. I'm not looked at this company. नहीं मार्केट प्लेस है पहला वाला तो इंफ्रा डॉट मार्केट इज अ मार्केट प्लेस विक्रांत जो है आई डोंट नो वेदर इट्स अ मार्केट प्लेस देखना पड़ेगा चेक कर लेते हैं अभी 2 मिनट में पता But off business, is it similar to something off business? What they are doing? What Ashish Mahapatra is doing? Or आई डोंट थिंक सो ये मेरे ख्याल से हैवी इंजीनियरिंग में डील करते हैं सर दे आर इनटू हैवी इंजीनियरिंग तो प्रॉपर आई एम अज्यूमिंग इनको गवर्नमेंट टेंडर्स और वो वाला गेम है इनका पूरा का पूरा व्हाट आई okay, अंडरस्टैंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसमिशन तो right. So these kind of businesses, I was discussing a similar business last week. Somebody who's doing a lot of work with government in the water sector or trying to do, right? okay And this guy came to us, or we have been discussing funding for him, and he's he has been in the water sector for 10 plus years, but he wants to take large government projects. Now, these kind of businesses, I don't know, are kind of tricky because I don't assess their investability, right? Because the payback for them for these projects is usually there is a lot of lag, right? And there is no yeah clarity. It's reversed little bit. So, and then I tell them, why don't you go to the bank? Because, some of the projects which you are chasing are actually, you can go to the bank, but then they give us reasons like, CIBIL, etc. will get affected. It will reflect in that. So somehow these B2G kind of business models, founders, they tend to think that venture capital is free money, Hmm. right? They don't want to go to the bank, but they want to raise the money. At least last 2 3 interactions which I have had. Hmm. Now that's a problem, right? So because anyways, I don't have full confidence in your cash flow when it's going to come back to you. There are many startups in the defense sector also who are doing this kind of business, but there is no clarity on the payback. So I don't know if venture capital is the best route for them. Uh, Hmm. so that is my take on this. But that's mostly confined to B2G. या Uh, आई गेट इट मेरे को वही लगता है ये इन्वेस्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है ये तो आई एम सरप्राइज्ड कि इसमें ग्रोथ स्टेज पैसा गया कैसे है बट ठीक है अम, but who has provided the funding? वही देख रहा हूँ मैं
विक्रांत फंडिंग, विक्रांत ने अभी पैसे उठाए हैं, प्री आईपीओ उठाए इन लोगों ने। इन्फ्लेक्शन किसने किसने डाला है? इंडिया इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी फंड, आशीष कचोलिया एंड अदर्स। ये 45 करोड़ गया है इंडिया इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी फंड से। देन देर इज दिस वन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। सो ये तो आई बैंकिंग हो गया। दिस इज इट। ये इंडिया इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी फंड मुझे गवर्नमेंट का ही लग रहा है। गवर्नमेंट का है क्या? Not sure. आईआईओएफ आई Not थिंक। sure. ठीक करके तो वैसा ही लग रहा है मेरे को। Okay. अ, 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 ये रहा ना, पैंटोमैथ। पैंटोमैथ का है ये। सेकंड, दिस कैटेगरी 2, पैंटोमैथ फाइनेंशियल सर्विसेज, प्री आईपीओ। हम्म, ये तो दूसरा ही कोई एक फंड है सर। आए इनका मेरे ख्याल से Uh, I, फोकस ही I होगा, फोकस ही होगा इनका रियल एस्टेट में। I miss the good old days when you could count the VCs in India on your fingers. No? या आई नो, अभी तो और बढ़ेगा सर। Yeah, so it's becoming very commoditized, and earlier it was differentiation plus scale on the fund या size. Now या it's commoditized and smaller micro funds, right? So I mean, I don't know most of the players who are like in that हम्म, 0 to 50 million range or 100 right, million range. या You may have never heard about them. या 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 चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो ये छोटा सा सिटी का फटना है। एज यूजुअल बैंगलोर लीड्स इन द नंबर ऑफ डील्स व्हिच इज हैपेंड इन इंडिया। बैंगलोर डज 8, दिल्ली एनसीआर हैदराबाद डू 3, बॉम्बे डज 2, थाने 2। सो बॉम्बे को 6 कर सकते हो, बॉम्बे द होल ऑफ बॉम्बे, एंड देन देयर इज जयपुर व्हिच डिड 1। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरेस्टिंग बिट। सो हमने क्या किया है, हमने विकिपीडिया से सारे के सारे नाम निकाले हैं कि किसको कितना पैसा मिला है। and we are basically going to, there are 18 startups which got funded across 6 episodes which have happened, and then abhi to chalta rahega ye karwa. But what we have seen is Shark Tank actually provides a lot of amplification, lot of eyeballs to obscure startups which suddenly gain a lot of limelight and a lot of traction on the product. तो मार्केटिंग प्रमोशंस में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है फॉर स्टार्टअप्स। बट जहां तक डील की बात होती है, थिंग्स आर अ लिटिल बिट, मतलब एक तो खैर वो वाली बात भी है कि पैसा मतलब once they commit people pay or not. But I think let's not, let's try, and the whole intent of today's event or today's show is we'll try and analyze what made them go for this from a business standpoint. Does it make sense or not? तो एक एक करके चलेंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे। एंड आई थिंक इससे पहले मेरे ख्याल से वन मोर थिंग विच आई थिंक वी शुड डू इज दी पेटीएम का न्यूज, क्योंकि आई थिंक ये वाला मिस हो जाएगा लास्ट के लिए। एंड आकाश को हम स्पेशली उसके लिए बुला करके लाए हैं। एंड आकाश कुलमणि, आप लोग का इनपुट का बहुत जरूरत रहेगा इसमें, बिकॉज पेटीएम इज डेड। नहीं मतलब जो जो खबरें आ रही हैं कि भाई अब तो आरबीआई ने खींच लिया, कुछ करने नहीं देगा, तो क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड? आकाश आप चालू करो, फिर कुलमणि आप ऐड करना, बिकॉज मैं तो I एकदम जीरो think हूँ सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा पेटीएम वॉलेट चलेगा कि नहीं, मुझे Okay. बस ये बताओ। Good question. So the thing is, I think Paytm will be there for a long time. So if you see the top line for Paytm in the whole year is like close to 7,000, like 700 CRs, right? या And this is and the impact could be around 300 to 500 CR. Okay. या So if you really want to see numbers, right, you can just go to screener.in, and there I will actually explain you the exact numbers. स्क्रीनर। Open screener. Yeah, SCRE, or if you हाँ, want, I can share my screen. I can open it. Screener.in. स्क्रीनर डॉट इन। Dot in. Yeah, dot in. ओके। Yeah, search for Paytm.
197. Go to bottom, Uh, bottom. Scroll down to the bottom. Yeah, just here. Just look for this like on the right hand side. The like for Jan 2024. Just click on the PPT. Yeah, click on okay. this. Yeah, scroll down. Hmm. So this is the quarterly report. So just go up. Like first, like I'll show you their business. मसाला Yeah, इतना just go मसाला up. Just go. क्या बात है Go up. दो Go दो up. Mm. Yeah, here, just stick to here, right? So okay if you see, Paytm is broken into basically three pieces, right? One is okay the payment services, which is around 1,700 cr. yeah Like if you look at the this December 23 numbers, then there is financial services, and then there are marketing services, right? So there yeah is no impact to financial services and marketing services. That is okay first part. Now, so now the question is that what is happening to the payment services, which is around 1,730 cr. So yeah if you scroll down, just go to like page 11. page 11 okay Yeah, just stick to it. Yeah. So if we look at the number of December 23, right? So what you hmm see is that in Paytm in financial services, if you see there is around 598 cr for the Paytm services to consumer, and around 1,081 cr for Paytm services to merchant. Right? No, this yeah is this December 2020. Yeah, yeah look at the December 23 number. Correct. yeah So this is the breakup of that like 1,700 CR number. So if you see, there is no impact on the Paytm services to merchants, right? Why? Because most of these things are offline. These are these are the QR and the sound box, those yeah things, right? Which has yeah no impact of the Paytm bank. So now okay the impact is only on this number, which is 598 CR, right? The impact is only on this number, right? Now the thing, if you remember, in March 2022, right, there was a news that Paytm bank, it can't open an account for new customers. yeah 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 So since March 2022, any wallet, any fastag, any account which has been opened is not from the Paytm bank, but it is from some other bank, right? got it Which is in partnership with Paytm, right? So got it if you see, right, the slide what you are showing, right, what you have also mentioned that there is an impact of 500 cr. yeah So what it means that this split, right, which means that if we divide 500 cr by 4, right, so close to that, so there is an impact of 125 cr on every quarter. These 125 cr money will come from the people who have the account, like the wallet, fastag, all those things from the Paytm bank. So the impact is just 500 cr out of the 7,700 cr of the top line of Paytm. So the okay impact is not that much, which has been basically made out. And yeah, and since like March of 2022, right, there is no new customer of like Paytm bank. So I'm sure, I mean, they can basically manage it. The impact is extremely Wait, low. so they have any which way said that they are going to completely Mhm. go to other bank partners now, right? So they're Exactly. basically, So yeah, yeah, exactly. So now this 500 CR is the worst case, right? So yeah, most like what I feel would happen in the next month is that the customers who have like wallets and accounts from the Paytm bank, right, which they have opened before March 2022, that will also be slowly basically change into newer banks. So that's how. So that is why I feel that the impact should basically not be that much. हाँ पर मुझे एक बात बताओ for a user for a consumer what changes Mhm. do the sound boxes stop working or do No, we no, not there get is no access to impact. wallets or can we not transfer money what's the Mhm. damage Yeah. So first of all, for UPI, for Soundbox, all these things have no impact, right? Only impact is on wallets and the savings account, or basically these kind of accounts what you have opened from Paytm. That will also be impacted only if your wallet has been created with the payment with the Paytm bank. Okay. If your wallet is created after March of 2022,
there will be no impact on your wallet or your account as well, right? अच्छा, तो So the इसमें केवाईसी impact का गेम है is क्या? exactly the game is of that only. Who लीनियल has when केवाईसी you और open that पार्शियल account? केवाईसी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मतलब ये केवाईसी में धांधली कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे ढंग से, लीनियनली नहीं दे यूज्ड टू वो सर्कमवेंट, व्हाट्स द इशू? इशू अलग है। इशू बेसिकली क्या होगा कि जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, राइट? हाँ। So, I mean, the way you can access the data of the customer, right? PII information should be encrypted. All those, like, there are a lot of rules. मोस्टली क्या हुआ होगा कि जो पेटीएम बैंक के अंदर जो कस्टमर का जो डेटा है ना, उसका जो यूज हुआ होगा ना, दैट माइट बी रॉन्ग। दैट इज हाँ। माय या दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी कस्टमर का डेटा है, जो भी ट्रांजैक्शन का डेटा हो रहा होगा इनसाइड द पेटीएम बैंक, दैट डेटा माइट नॉट बी like used basically rightly. I think that is the हम्म। issue. कुलमणि सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Yeah, the way Akash has summarized, I'm just covering public equities. And then yaad aa gaye. So that's the beauty of public companies, right? You have most of the numbers open, and now on the private side, it's a bit difficult. But yeah, in fact, there is a saying by Howard Marks is that trees don't grow to the sky and nothing goes to zero, right? Yeah. So I think the impact is largely exaggerated here. I think because PTM is so, it touches all of us in a way or so. I think overall they will survive. I don't think there's an issue. They will partner with banks in the background. I don't know if you guys remember when you had this option on your app, transfer to your bank account. Yeah, yeah. Yeah, you could enter the bank account and then you could transfer the money. Now they started routing to their payment bank. So now if you clicked on transfer to bank account, they will ask you to open a bank account with PTM Bank, and then you can transfer. वॉलेट से भी Uh, डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं अभी, बट आई डोंट नो अब पॉसिबल होगा कि bank नहीं। account to the bank account. या You can. या Now, I used to use this on the homepage. They have this option, right, to mobile number, to other या things. टू बैंक अकाउंट, या आईएफएससी एंड बैंक Okay. अकाउंट यू सेइंग। Yeah, you could enter IFSC and bank account and transfer that. But I think lately what I noticed is that they started routing those requests to their. You had to open probably a bank account with हाँ, them. So probably. really a funnel. So that's the difference I noticed. But I don't think anything changes as such. Financial services is a highly regulated sector, and rightly so. Uh, there are many crises globally which start in financial sector, and then bank run is very very real as all of us know. So I don't think much will change for it's a ठीक है, public company. 300-500 करोड़ इस पॉकेट चेंज यार इन लोगों के लिए। और Yeah, ये भी yeah. बोल रहा है पेटीएम पेमेंट्स, बट पेटीएम पेमेंट्स वाज अ लायन शेयर ऑफ द रेवेन्यू यार, दे वुड नॉट वांट इट टू गेट हैम्पर्ड इन एनी वे। Hmm. मार्केटिंग मार्केटिंग से थोड़ी ना पैसे बनता है यार। ठीक है, चलो, थैंक यू आकाश, थैंक्स कुलमणि फॉर दैट। आई थिंक दिस रियली हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग अ लॉट ऑफ Yeah. थिंग्स। मेरे को अभी भी वैसे जवाब And नहीं मिला है कि just वॉलेट चलेगा कि नहीं। yeah, just one last point, right? So I हाँ mean, you have been saying, right, that the lion shares actually Paytm is making lion share of money from merchants actually. So if हाँ you see, right, the sound box and all. So if you या see that the margin of the 1000 CR, which is the money what they make from merchant, that thing has a very very high margin. From consumers, they are not making much money. So when you do a basically UPI payment, right, we are not paying them, right? They have been paid by the government. So government actually pays like for the UPI payment, and the same thing like if you use the card, right? Any Mastercard or Visa card, right? So if it is debit card, there is like MDR of like 0.3 to 1%, while if you use a credit card, it has an MDR of 2%, right? So what happens is that these basically middleman makes money, but for UPI, no one makes money. So the government of India actually pays them. So the margin there is extremely low. The margin, the higher margin business for Paytm is
is the is the services which is being basically sold to merchants. That is the one which Hmm. is making the Nee, most but money. that is So I not think with there is no Paytm Payments impact. Bank, is what you're saying. Yeah, yeah, that is there. So merchant is not at all basically there is no impact on the merchant side, right? Because like for Soundbox there is no impact. For the Paytm QR there is no impact. So Hmm. what might happen that any merchants which had come to like Paytm before March of 2022, they might have opened their account on Paytm bank, right? But after March of 2022, most of the merchants the account of the merchants are not on Paytm, right? It is on some other bank, and in this 1 month, they will move the merchants bank from Paytm bank to some To some other other bank, right? bank. Acha. Right, right. And from the merchant side, right, they have so like Paytm has a sales guy who actually talk to each of the each of the merchants. So for them to move the like bank account of merchant is like I feel 1 month is more than sufficient time to move that. So the impact will only come from the payment services, but like if your wallet is basically is from the Paytm bank, only then like it will impact, else there won't be any impact. हम्म, चेक करना पड़ेगा यार, मैं तो बहुत यूज करता हूँ पेटीएम. आई एम वेरी कंसर्न. बट ठीक है, आई थिंक थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द मेन स्टोरी. सो बेसिकली शार्क टैंक चालू हो गया है. हर हफ्ते अब हम मेरे ख्याल से 18 से 20 स्टार्टअप्स एनालाइज करेंगे. चालू करते हैं सबसे पहले ऑनेस्ट ओम से. हॉनेस्ट होम इज बेसिकली एन इको फ्रेंडली डेली यूज पर. मैं सारे के सारे जितने भी स्टार्टअप्स के बारे में बात करूंगा, आई विल ओपन देयर वेबसाइट्स एज वेल पैरेलली, सो ऑल ऑफ अस कैन गो थ्रू इट कि भाई करते क्या है ये असल में. ठीक है, तो ये देखो, ये बनाते हैं टिश्यू बॉक्स. ये सारे की सारी चीजें जो है ना, पर्सनल हाइजीन, फूड, किचन हाइजीन एंड हाउस होल्ड क्लीनर, ये सारी की सारी चीजें ये बनाते हैं. दे बेसिकली मेक इको फ्रेंडली हाउस होल्ड डेली यूज प्रोडक्ट्स. 1 करोड़ का उनको चाहिए था 2% इक्विटी पे, और इनको डील दिया है अमित जैन ने फॉर 1%, 1 करोड़ फॉर 3% इक्विटी प्लस 1% रॉयल्टी अंटिल 1.5 CRR रिकूप्ड. ये धंधा अच्छा कर रही है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, बट ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्या लगता है गुलमणि आपको? यार व्हाट मैंने डू आज यू तक थिंक? शार्क टैंक का एक ही एपिसोड देखा नहीं है, सो आई डोंट अरे नो मैं व्हाट तो इसीलिए, हैपेंस. मैं तो आपको वो भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं फाउंडर स्टोरी पे जा भी नहीं रहा हूँ. इसीलिए तो मैं बोला कि वी विल गो थ्रू द वेबसाइट, विल नॉट गो थ्रू द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू इज ओके, मैनिपुलेटिव. लेट्स लुक एट द प्रोडक्ट एंड सी वेदर प्रोडक्ट में दम है कि नहीं. व्हाट आर तो दे डूइंग? सस्टेनेबल. इको फ्रेंडली डेली यूज प्रोडक्ट्स, पर्सनल हाइजीन, फूड रैपिंग, किचन हाइजीन एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग. तो ये गार्बेज बैग्स होते हैं ना, ये इको फ्रेंडली कर दिए इन्होंने. ये एल्यूमिनियम फॉइल जो है ना, राइट, ये राइट. इको फ्रेंडली कर दिए इन्होंने. क्या गॉट लगता है इट, आपको? गॉट इट. And how they are cost competitive? I don't know how much is the foil is हाँ, 245. मुझे लग रहा है कि प्रीमियम होगा. नहीं तो बनेगा कैसे, मतलब चलेगा कैसे? ये भी Hmm. एक बार देखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में ना. हाउ डू आई फाइंड? ये तो महंगा होगा यार, ऑब्वियसली महंगा होगा. Just scroll down. They have mentioned the दे mentioned. मेंशन्ड Just scroll down. Yeah, wait here, wait. Hmm. Just कस्टमर scroll slowly. फीडबैक है ये Go. तो. No, no, go up. Go. अच्छा, Go up. एक्सप्लोर Up, up, लेटेस्ट. up, ये भी up, 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 एक्सप्लोर ही है. up. स्विच टू पाउडर टेक फॉर. No, no, go up, go up. Go up. It's just explanation of them. ये है I मोर think they have. No, no, नॉन go up. टॉक्सिक, Go up. इको Go. इजी, नो टू प्लास्टिक. नहीं, इधर Yeah, दाम ही लिखा it's हुआ है the यहाँ पे. amount. Here's the amount. नहीं, So this, I अमाउंट mean, we है, मैं can वही तो compare बोल it. रहा हूँ. आप 199 में 9 मीटर एल्यूमिनियम फॉइल कितना ही मिलता है, देख लेते हैं. Hmm. कितने का बोल रहा है शिपिंग? 325. 150 रुपए, 90 रुपए का माल है. यहाँ पे वो भी बेच Hmm. रहा दो है दे दो रहा है सौ पैक. रुपए का. प्रीमियम दो तो है पैक है ना, दोस्त. लाइक पैक ऑफ टू. नहीं नहीं, पैक ऑफ टू है वो. पैक ऑफ 2 है. सेम ही है, हाँ, ये प्राइसिंग पैक सेम ऑफ है. टू है. हाँ, अभी सेम तो ही उस है पे दे रहे प्राइसिंग होंगे, बट बस. ठीक है, तो 99 का पकड़ ले. ठीक है, प्राइस कॉम्पिटिटिव है यार. गार्बेज बैग्स भी एक बार देख लेते हैं.
They want to sell it at 278, but they are selling it at 199. Is it 249? Yeah, yeah, yeah. So the discount pricing, I अभी don't know how. Abhi, for now they have, right? They may be uh, burning, right? इसका मार्केट And है क्या इको फ्रेंडली डेली यूज का? yeah, this is again Same cost. 1% kind of product, right? तो 1% प्रोडक्ट है तब तो प्रीमियम ही बेचेगा ना? Indian kind of product, I think this is. हाँ हाँ, नहीं ठीक है, फिर सेंस बनता है यार मेरे ख्याल से। बाकियों पे भी जल्दी जल्दी चल लेता है क्योंकि एक के ऊपर ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि 18 स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो हर हफ्ते 18 नए स्टार्टअप्स को एक मेन स्ट्रीम इस पे जगह मिल रही है। दैट्स अ रियली कमेंडेबल जॉब। आदिल कादरी मैंने पहली बार देखा था तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मुझे लगा किसी बंदे का नाम है, पर इट्स लग्जरी प्रीमियम परफ्यूम्स, राइट? सो दिस कंपनी इज बेसिकली मेरे ख्याल से दुबई से अतर है। हाँ, प्रीमियम अतर। दे आर इनटू गिफ्ट बॉक्सेस, परफ्यूम्स एंड ऑल। 1 CR फॉर 0.5% इक्विटी। विनीता ने डाला है पैसा फॉर ऑब्वियस रीजंस, मेरे ख्याल से शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ अच्छा जाता है इनका। एंड आई थिंक प्रीमियम है, क्वालिटी भी होगी। शी वांटेड वन इन हर पोर्टफोलियो एंड शी वेंट फॉर इट। क्या लगता है? I think people are buying more premium things या lately. या If you look at consumer brands, या but see, if you put yourself in the shoes of the consumer, let's take example of people around me, or let's say me. I can always go to Mecca and buy global premium brand, right? या I can buy, let's say, Burberry or रेट देखो ना सर, प्रीमियम दे रहा है 999 में। मेरे ख्याल से वो है गेम। do you think that customer will come here? Somebody who's paying 8,000, 10,000 will go for this. I don't know. सो मेरे ख्याल से ये ब्रांड बंदे का ब्रांड है। आई थिंक वैसा ही सीन है कि बंदा अब ज्यादा फेमस है प्रोडक्ट से, एज इन द प्रोडक्ट केम फ्रॉम द मैन एंड नॉट द अदर वे अराउंड, आई थिंक। तो ओके, इंटरेस्टिंग, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। लेट मी फिगर इट आउट। मेरे को कॉन्शियस केमिस्ट का बताओ। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड आई वांट यू टू कंपेयर दिस विद दिस ऑनेस्ट होम कंपनी। कॉन्शियस केमिस्ट इज बेसिकली डूइंग स्किन केयर, ये स्किन केयर प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट एंड दे बेसिकली गिव अ, इनका भी मेरे ख्याल से वही वाला स्पिन है। आई थिंक देयर इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट, या इट्स अ स्किन केयर प्रोडक्ट ब्रांड। एंड दे बेसिकली गो मेरे ख्याल से, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द, इनका वो है कोई कोई इलनेस या फिर कोई आपको ये है दवाइयों की जरूरत है, तो उसके लिए आप शायद कर सकते हैं। पर इनको कोई फंडिंग मिली नहीं। मुझे वही लगता है कि ये वाला मार्केट पूरा सैचुरेट हो गया है क्या फॉर D2C स्किन केयर, एंड यू बेसिकली, मतलब आई एम सरप्राइज दैट दिस कंपनी डिडंट रेज, गिवन द फैक्ट कि विनीता एंड ऑल वर आल्सो देयर। विनीता भी थी, नमिता भी है, तो फिर इन लोगों ने पैसा क्यों नहीं डाला? नमिता नहीं है क्या इस बार? ओ, नमिता इज नॉट देयर दिस टाइम। Oh no, she's there. Navita didn't pick it up. I'm surprised. And then comes Cinnamon Kitchen. Cinnamon Kitchen is plant-based healthy snacks. ठीक है, इसका भी हम देखते हैं एक बार। Cinnamon Kitchen. Cinnamon Kitchen is also basically सारे जो आपके चिप्स है, कुकीज है, स्प्रेड्स है, बेक्स है, ये सारे के सारे जो है, दिस इज समथिंग विच, सो बेसिकली जैसे एम कैफीन था ना, वैसा ये सिनेमन किचन हो गया है। तो इस टाइप के निशेस चलते हैं नहीं गुलमणि, कि आपने एक सर्टेन वो पकड़ लिया और उसके अराउंड आपने पूरा का पूरा जितने भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है खाने पीने और लगाने के, सारे बना दिए। अ, Uh, yes and no. I mean, see.
even if you build a consumer brand, ultimately it's a consumer brand, right? Yeah. And then you have to figure out a lot of things like distribution and other things, right, which are critical. But I see a large uh, affinity of younger folks for vegan and plant-based products. Uh, It's a market which I've been looking at. So I spoke to someone who imports meat plants into India. So let's say mm, Alicia's or somebody building a plant-based protein brand or whatever. mm, They import large plants from Europe because these manufacturing plants are imported into our country from other countries. mm, So I was understanding from him that what is his demand for vegan plants, right? Similar, it's like a cousin of plant-based, but vegan is slightly different. So he gave me an interesting fact, and the idea of speaking to him was to understand the demand for these kind of products because if you have the plants brought into the country, that means people are using them to manufacture those goods. So he told me between 1980 and 2017, he probably brought one plant into our mm. country. And between 2017 and this, he has brought probably, several plants. So definitely people are setting up those, the backend is also getting integrated where people are setting up these large plants for vegan and हम्म plant-based हेल्थ products. कॉन्शियस जनरेशन बन रही है ना अभी जो हमारी नई जनरेशन है Hmm. So yeah, this will be also, the target will be Gen Z and Gen Alpha also. I think हम्म so. There is some scope where you can transfer additional premium to the customer. हम्म But definitely vegan and plant-based large upswing in demand and there is premiumization in valuation also. People are asking for and there are startups which have shut down also. There are a couple of vegan brands which I met. They have shut down. हम्म They were doing these patties kind of stuff in Bangalore and Delhi, but हम्म shut down because they realized how challenging it was to get the shelf space. Because this kind of product will sell at food hall or La Marche, right? हम्म This will not sell at your regular 24/7. yeah yeah Uh, yeah So they figured out that it's very difficult. Uh, but yeah, definitely overall, I would say demand to have vegan or plant-based tea. Even plant-based protein, nutraceuticals, these products are in demand. हम्म अगला प्रोडक्ट है WTF जिम्स जो 1 करोड़ मांग रहा था 2 अच्छा बाय द वे सिनेमन किचन गॉट फंडेड बाय अमन गुप्ता आ, मेरे ख्याल Hmm. से 2 मिलियन के आसपास का लगाया है इसने वैल्यूएशन 5 मांग रहे थे 2 मिला है इनको गुड नेगोशिएशन ठीक है so WTF gyms is basically they are basically a gymming service और मेरे ख्याल से यस सो बेसिकली इनका क्या है ये सारा ऑल इंक्लूसिव फिटनेस सॉल्यूशंस है इनका दे हैव गॉट एआई ड्रिवन जिम्स ठीक है तो मुझे तो एआई ड्रिवन जिम देख करके मुझे लग रहा है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं There are सो startups which are doing AI-driven yoga also. Have you heard एआई of ड्रिवन them? योगा इज स्टिल Yeah, yeah. अंडरस्टैंडेबल एआई ड्रिवन जिम कैसे कर सकते हो आप आपका ट्रेनर क्या रोबोट है या So, so what happens is that you put the phone in front of you, and algorithm tells you corrects your posture. It matches your अच्छा point, whether you are doing the exercise properly or not, right? It can इंटरेस्टिंग recognize your form and shape. So that's where the AI yoga also comes in. When you're doing a asana, it can tell you whether you're doing it correctly, etc. etc. इसमें And सारी there are चीजों में ये European एआई startups डाल also. दिया इन लोगों ने सॉरी हाँ There are European startups also which are doing this AI yoga thing now. इंटरेस्टिंग इसने सारी चीजों में एआई डाल दिया है भाई ये तो अलग लेवल है डीजी जिम में भी एआई है पर्सनल ट्रेनिंग में भी एआई डाल दिया है ये तो मेरे को लग रहा है किसी इन्वेस्टर पिच पे ज्यादा ही है बट एनीवेज दिस कंपनी डिडंट गेट फंडेड द नेक्स्ट कंपनी वाज इंटरव्यू इंटरेस्टिंगली आई थिंक दिस कंपनी इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डर्स क्लब मुझे देखना पड़ेगा आई थिंक दिस गाय इज पार्ट सो ये क्या करता है इंटरव्यू एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है इज एज सिंपल एज दैट
दे बेसिकली हेल्प कंडक्ट ऑनलाइन इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये टेक के फोकस्ड है completely, and they basically are a platform through which you can organize, filter, organize, and then close these things. ऐसी मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनीज थी, नहीं? एक जमाना आया था 2020-21 में, जब ऐसी भेड़िया धसान इतनी सारी कंपनीज खुल रही थी। तो मेरे and I think there were companies who have done tests and all as well. तो is this kind of this is this industry still alive, Kulmani? From an investor standpoint, not talking from a business standpoint. Business में तो है ही, पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट है अभी भी इसमें? या Uh, मेरे ख्याल से इनके इंटीग्रेशन ज्यादा बेटर होंगे। ये हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल प्रोडक्ट्स, जहाँ इंटरव्यू कर right. दिया उन्होंने, आई थिंक इनके इंटीग्रेशंस और ये सब जो है ना, आई थिंक दिस मेक्स द पीपल्स लाइव्स अ लिटिल बिट मोर इजियर, which is usually not available for the others, this thing की scheduling भी यहीं से हो रही है, सारे के सारे वो नोट्स भी ये ले रहा है, एक्सटर्नल इंटरव्यूज भी जो है वो जोहो रिक्रूट के साथ इंटीग्रेटेड है, मुझे लग रहा है वो होगा ये। Right, right, right. So this So what, sorry, go on. there are still, founders who are building in this space. I'm not tracked. I've met a couple of founders over the last year building in HR tech space, something similar. And then second is this, examination monitoring kind of softwares. Hmm. Hmm. Also, Hmm. because a lot of colleges, etc., are now doing exams online, right? And Hmm. 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 there is rain, etc., etc. You can't take the exam from home. Hmm. Hmm. So, yeah, but this will, where will you put it? Will you put it adjacent to SaaS? इंटरव्यू एज अ This kind of सर्विस बोल रहा है, SaaS ही है। दैट इज द right? रीजन व्हाई दे माइट हैव गॉटन फंडेड। मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, इनका पूरा ऑटोमेटेड होगा, मुझे वही लग रहा है। जो समझ में भी आ रहा है ना, ये देखो ना, आई थिंक द होल थिंग इज completely automated. Probably that's the reason why. तो इसको अमन ने फंड किया 1.5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। देन कम्स Rodbez. Rodbez इज अ टैक्सी सर्विस फॉर बिहार। ये इंटरेस्टिंग है, इसमें दो लोगों ने पैसा डाला है। इसके बारे में जानना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस पे किसने डाला है? इसमें विनीता ने डाला एंड रितेश अग्रवाल ने डाला। इंटरेस्टिंग। ओके। वन वे टैक्सी, टैक्सी पुलिंग, गांव की गलियों से पटना की सड़कों तक। तो ये बेसिकली वहां का ब्लू स्मार्ट है क्या? बिहार, बिहार का टैक्सी, वन वे टैक्सी एंड टैक्सी पुलिंग। ठीक है। ऑन टाइम एयरपोर्ट कमिटमेंट, बिहार का सबसे लार्जेस्ट ये है। We are building a community where people can travel on a budget, and the people who will drive will get a good amount. Clean and maintained cab. Interesting. ये geography driven टैक्सी सर्विस, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। इज इट स्पेसिफिकली अ बिहार प्रॉब्लम? देखे जरा क्या बोलते हैं इसके बारे में। कुछ ना कुछ तो काम, यूट्यूब से सीख कर बनाई कंपनी। अरे कुछ भी। रिक्शा चलाने से सब, अरे ये लोग तो अभी फाउंडर फोकस स्टोरीज आनी चालू हो गई। धंधे के बारे में बताओ। मल्टी करोर। ओके। अच्छा, ये कहानी पे बिका है सर। रिक्शा वाला है जिसने टैक्सी सर्विस बनाई है, ये कहानी पे बिना बिका है। इसकी कहानी मतलब इसको फंडिंग मिली ही इस अपनी कहानी के ऊपर है। एवरी विलेज इन बिहार विद अ टैक्सी, ये गांव के लिए टैक्सी बनाना चाहता है। सोशल चेंज पे इसको मिला है। क्या लगता है आपको? It's kind of building a platform, if I'm not wrong. या ये देखो ना, इट्स अ प्लेटफॉर्म क्लेम्स टू हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड सेकंड फेज, और ये ड्राइवर्स को अच्छा पैसा भी दे रहा है। मार्जिन मेरे ख्याल से थोड़ा कम होगा, बट आई थिंक ही इज हैप्पी विथ व्हाट ही इज मेकिंग।
हम्म। इसका वो होगा कि ड्राइवर्स को अच्छा तो पैसा मिले, सब कोई जा सके आ सके। वेरी इंटरेस्टिंग। अगला धंधा, अगला वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज ब्लिक्स। ब्लिक्स इज अ रोबोटिक्स टॉय। तो ये तो मेरे ख्याल से इन है सर, ब्लिक्स टॉयज। ठीक है, तो ये दीज आर बेसिकली पीपल लर्निंग यूजिंग ये। मैकेनिक्स हुआ करता है लेगो का, इफ यू रिमेम्बर। ये उसी का इंडियन वर्जन है। ठीक है, तो एंड आई थिंक द स्कूल्स और ये सब में उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। इन्होंने देखो ना, इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर स्कूल्स, पूरा का पूरा करिकुलम ही बना दिया इन लोगों ने। तो आई एम अज्यूमिंग इनका जीटीएम अच्छा है, इनका प्रोडक्ट बढ़िया है। ठीक है, और इनको पैसा दिया है अमन। अमन ने डाला और रितेश ने डाला। हाँ, 80 लाख फॉर 4% इक्विटी। ये भी सस्ता ही है यार। कितना हो गया? what is the 25। conditional offer? What is the conditional? कंडीशनल ऑफर तो नहीं पता चल रहा है मेरे को यहाँ पे। कुछ तो कंडीशन लगाया होगा इसने। तो प्रोवाइडेड आप इतना कर दो। देखे जरा ब्लिक्स का ऑफर। It's a target based funding, maybe. That's what हाँ, you mean? या Okay. टारगेट बेस्ड ही होगा, देख लेते हैं ना अभी। अरे वेट यार, ब्लिक्स 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 ब्लिक्स। हम्म, उसका तो वीडियो देखना पड़ेगा पूरा। इंडिविजुअल आया नहीं अभी तक। टॉप स्टार्टअप्स, सिनेमन पोर्ट, ये रहा ना ब्लिक्स। इन्वेस्टेड इतने ही बता रहे हैं, ये लोग डिटेल में नहीं जाते ना सर, ये तो इनका काम है बस छाप देना। Okay. Okay. Yeah, चलो। but I agree with you. This segment is attractive. या वेरी अट्रैक्टिव। Like, I've been trying to understand the whole kids economy also for some time now. But there is, definitely potential there. Building या around kids. ओके, अगला है होम वर्सिटी विच इज स्टूडेंट हाउसिंग। ये तो मेरे ख्याल से ऐसे ही नो डील हो जाता। ये आया ही क्यों? तो चलो, इससे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो देयर इज इंटेलिजेंट क्लोथिंग, TURMS। इसको, इसमें पैसा डाला है अजहर इकबाल ने। सो लेट मी जस्ट चेक व्हाट दे डू। TURMS क्लोथिंग, इंटेलिजेंट अपैरल, intelligently not made, okay, real jeans, advanced technology fabric, rugged yet soft। अच्छा, धोनी इज their brand ambassador। अच्छा, कैप्टन कूल ऑन सोशल मीडिया। तो कपड़ा गंदा नहीं होता, गंदा नहीं, ये नहीं मारता, बास नहीं मारता। 30 दिन तक कपड़ा धोओगे नहीं तो भी कुछ खराब नहीं होगा। मुझे स्मेल नहीं करते। दिस इज वेरी गुड। भाई ये तो चाहिए। 30 डे नो वॉश ट्रैवल एडिशन जीन्स भी है इनके पास। 7 डे नो वॉश प्रीमियम चीनोज। पैंट वैसे भी जीन्स कोई नहीं धोता सर, ये तो मार्केटिंग है। जीन्स तो वैसे ही नहीं धुलती। मैं 2 मिनट के लिए Check ये the हो गया price, था। check the price. Let's check हाँ, the price. Let's check the price ना, देखते हैं हाँ, कितना 1500 डिफरेंस है रुपए का प्रीमियम दे रहे से। हैं सर, पैक ऑफ 3 मुझे। 500 रुपए का मुझा। ठीक है, टी शर्ट है, मतलब सही है सर, इन्होंने अपना टीजे पकड़ रखा है। हम नहीं, हम हंस रहे हैं, जनता लेगी यार, लोगों को लगेगा यार नहीं धोना मेरे को। ठीक है, 500 रुपए का है, 2000 रुपए का इनका इंटेलिजेंट शर्ट भी है। ये इंटेलिजेंट का क्या फंडा है भाई? हाउ इज इट इंटेलिजेंट? व्हाई, व्हाट मेक्स इट इंटेलिजेंट? नहीं लग रहा वॉन्डरलस्ट, ना इंटेलिजेंट। फाउंडर ऑफ, अच्छा, अच्छा इज द फाउंडर ऑफ इंश्योर्ट्स। इसीलिए ना, अच्छा नहीं नहीं नहीं, अजहर इकबाल फाउंडर ऑफ इंश्योर्ट्स वाज द दिस थिंग, जज हु गेव द मनी। टर्म्स, ट्रैक ऑर्डर्स, क्या है भाई? अबाउट अस, शो, इंटेलिजेंस, सारी चीजें इंटेलिजेंट है सर। वेलकम टू फैशन रेवोल्यूशन। अच्छा,
क्वालिटी ज्ञान है सर ये। इसको रहने दो। पर पैसे मिल गए इनको कपड़ों कपड़ों पे। देन देयर इज मिंट्री। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर मिंट्री को पैसे मिल रहा है, कॉन्शियस केमिस्ट को क्यों नहीं मिल रहा? व्हाट्स द डिफरेंस? मिंट्री देखें जरा। मिंट्री यूएसए, यूएसए की कंपनी है ये। नरिशिंग ऊद ऑलिव, अच्छा ये तो प्रीमियम चला गया ना। गॉन प्रीमियम। प्रीमियम। प्रीमियम इसमें तो होगा, और इनका मेरे ख्याल से वो भी होगा। दे मस्ट हैव सम यूएसपी आल्सो, सम यूएसपी समवेयर। सर्टिफाइड पार्टनर सैलून, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री, ऑर्गेनिक। क्या बॉम्बे की कंपनी है, काय का यूएस है। ठीक है, बट इनको पैसे मिले हैं। they got funded by पीयूष बंसल एंड अजहर इकबाल, सो आई एम अज्यूमिंग बढ़िया होगा इनका। 80 वॉश विच इज वाटरलेस वॉशिंग मशीन, इसको पैसे नहीं मिले बताओ। दिस इज इनोवेशन। देखें जरा 80 वॉश क्या करता है। How does it work? You know? वही देख रहे हैं सर। मतलब समय समय रहता तो हम जरूर वीडियो भी लगा करके देख लेते हैं। दैट वॉशेस क्लोथ्स इन 80 सेकेंड्स विदाउट वाटर। बी टू बी, बी टू बी बिजनेस पर्पसेस में ज्यादा इस्तेमाल होता है कि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनका। तो ये चलता कैसे है, अबाउट देखें। B2B पर जा रहा है, आई गेस, मतलब रेट हाई होगा ना हाँ कंज्यूमर्स हाँ, के लिए, बी टू बी में तुम सस्टेनेबल नहीं इंडस्ट्रियल होगा। लेवल का भी तो बेचोगे ना। वही और उनको मार्जिन। वैसे भी ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, इतने कपड़े होटल्स हॉस्पिटल सैलून्स। यहाँ पे अगर बिक रहा है तो इन लोगों ने, किसी ने फंडिंग क्यों नहीं की? और मेरे को ना ये पूरा का पूरा वेबसाइट ही इनका इन्वेस्टर पिच लग रहा है। इन्वेस्टर टेस्ट भी है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लगा रखा है इन लोगों ने। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन विंडो सीजन, ये काट रहा है भाई। ये काट रहा है, मुझे लगता नहीं है कुछ बिका है इसका। चलो ठीक है, इसको पैसे नहीं मिले। अब आते हैं हम दिल फूड्स। दिल फूड्स के बारे में मैंने काफी सुना है। दिल फूड्स मेरे ख्याल से किसकी कंपनी है? आई थिंक आ वेंचर्स, इज आ वेंचर्स नहीं, one of our contacts only has funded this company. I've forgotten the name, मैंने कहीं पे अभी पढ़ा उसके बारे में। So they're a virtual restaurant service and they're doing really well, right? तो ये मेरे ख्याल से कुछ तो 60, अर्जुन वैद्या ने इसमें पैसा डाला है। आई रिमेम्बर नाउ। तो अर्जुन वैद्या ने पैसा डाला है। ये क्या कर रही है कि ये क्लाउड किचन खोल रही है, डार्क वाले। ठीक है। और ये बोल रहे हैं लोगों को कि अर्न अप टू 5 लाख ईच मंथ फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग स्टोर एंड किचन विदाउट विथ आर क्लाउड ब्रांड्स। तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो है उसी को यूज कर रही है। तो जीरो सेटअप कॉस्ट है इसका, इस क्लाउड किचन का। बिकॉज जो ऑलरेडी जो दुकानें हैं उन्हीं को बोल रही है कि भाई तुम ही बनाओ, हम ब्रांड लगा करके बेचेंगे उसका। राइट। सो दे बेसिकली हैव एक्सपैंडेड क्वाइट फास्ट। इसमें काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट है बिकॉज इनका जीरो सेटअप कॉस्ट क्लाउड किचन का फंडा है। यप, ये देखो असेसमेंट कराएंगे ये जॉइन दिल फैमिली, फिर उनको सीआरएम दे देंगे जिसके थ्रू उनको ऑर्डर मिलेंगे, बना करके बेचो। सिंपल। और इनके बहुत सारे हैं, दे हैव डन क्वाइट अ बिट। आई थिंक ये कुछ 60-70 लोकेशंस में दे हैव मूव। तो दिल पंजाबी, आहार, चाटकल, खिचड़ी बार। आप स्विगी पे भी बहुत सारे आपको जो दिखोगे, मतलब ये तो अगेन दिस इज द यूजुअल थिंग। बट या दिस इज अ गुड कंपनी, दिस इज अ गुड कंपनी। इसमें सबने डाला, अगर आप देखोगे तो विनीता ने भी डाला, पीयूष ने भी डाला, दीपिंदर गोयल ने भी डाला है, और राधिका गुप्ता ने भी डाला है। क्या लगता है आपको कुलबड़ी सर, आप डालोगे? अब तो बढ़ गया। नो भाई। Thank you.
So for our theme for next 3 to 5 years is mostly around Middle India and Gen Z, Gen Alpha. Three things. Hmm. That's Hmm. the niche we are going to focus for next 5 years. Hmm. Not not distracted with the fads come and go, Hmm. sustainable EV. Things will come and Hmm. go. Hmm. Hmm. We've been slicing and dicing data for those sectors. We have some sectors for Gen Z, Gen Alpha. So, नहीं नहीं, but in general, फर्ज करो, hmm, if you're not following the thesis, let's say you're an angel and you wanna put in money, would you put it in Dil Foods? आपको business model enticing लग रहा है? not really. Not really? Why? I don't know uh, what will be their value ये kind of आपको lever. ज्यादा धंधा लाके देगा ना रेस्टोरेंट को. Hmm. But रेस्टोरेंट restaurant is a high mortality business, right? 96% shut down within तो the यार first देखो, year or so. इनका क्या है, जो एग्जिस्टिंग है वो अपना ब्रांड का बेच ही रहा है, साथ में बोल रहा है मैं दूसरा ब्रांड भी चिपकाऊंगा आपको. ठीक है. यू सेल फ्रॉम देयर ऑल्सो एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. I'll brand the whole thing for you and I'll keep a certain commission. अब इनका क्या है, even if the restaurants close, they don't have a problem because they don't have any skin in the game. They don't have any setup fee. It's just an app. असेसमेंट के बाद ऑनबोर्ड करते हैं और ऑर्डर आना चालू. स्विगी स्विगी जोमेटो सब जगह एनलिस्ट कर देंगे इनको. Hmm. ये Not अलकवच. confident about term value. Not confident about value per unit. हम्म. Will they survive? They compete. हम्म. What is stopping somebody like Yeah, Swiggy or that is a valid Zomato point. doing something small? Like Yeah, yeah. Swiggy also going for IPO, they will also have access to capital now. Zomato is already public. They may be a good target for acquisition though. I don't know. Yeah, Probably. yeah, yeah. Okay, moving on to Al Kavach. Al Kavach is an online security app. 50 लाख की मांग थी, 1.25% इक्विटी पे. 1 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी प्लस 2.5 एडवाइजरी इक्विटी फ्रॉम नमिता थापड़ एंड विनीता सिंह. वेरी इंटरेस्टिंग. ऑनलाइन सिक्योरिटी ऐप में इन लोगों ने पैसे क्यों डाले? क्या करती है? अच्छा, इनका मेरे ख्याल से विमेन वाला एंगल है क्या? दे आर अ सिक्योरिटी, मुंबई बेस्ड पार्ट सिक्योरिटी एजेंसी है ये तो. व्हाट? एम आई रीडिंग इट राइट? अल कवच है, एआई कवच है. एआई कवच है. मैं वही सोच रहा हूँ कि ये दुबई बेस्ड लग रही है मेरे को. वी हैव पुट अ D2C segment on hold. May relaunch on Google Play Store a few months down the line if possible. Website is will be fully rebranded for B2B purposes. So ये पूरा का पूरा ये घुस गया उसमें. नहीं यार, आई थिंक दिस इज द वन. आई थिंक आई बीन लुकिंग एट द रॉन्ग कंपनी. नहीं, इनका वेबसाइट ही डाउन है यार. उन्हीं का वही वेबसाइट है. इनकी कंपनी में पैसे गए हैं. बढ़िया है भाई. अच्छी ऑनलाइन सिक्योरिटी है. चलो, बार्टिजन्स इज कॉकटेल एंड मॉकटेल ब्रांड. ये फिर D2C प्रोडक्ट गया इस हफ्ते, इस 18 में. वन थिंग विच आई नोटिस्ड इज D2C ब्रांड, जैसे लास्ट ईयर ना, लास्ट सीजन में सारे D2C ब्रांड्स को पैसा डाला गया था. इस बार बहुत सारे D2C ब्रांड्स को मना कर रहे हैं यहाँ पे. अगर आप देखोगे, बार्टिजन्स इज ऑल्सो मना किया. अरेटो विच इज अ किड्स फुटवेयर ब्रांड, उसको भी मना कर दिया. आई थिंक मार्केट थोड़ा सैचुरेट हो गया. अभी इतना ज्यादा D2C हो गया ना, हर कोई अपना एक ब्रांड लेकर के खड़ा है. Now, if you don't have already traction or a certain loyal base, very difficult to build a brand like that. What do you think? Artisans is doing pre-mixed kind of cocktail and things, or what? Bartisans natural cocktail mixers है सर ये. ठीक It है, doesn't lower come. calories, makes for drinks, all natural. Okay, so it doesn't come packed, or it does come packed. Yeah, it comes gift boxes, cocktail mixes, combo packs.
Also, they do have combo packs, right? Yeah, yeah. They have combo packs. They have 9 products. Single serve, summer combo, gin combo, whiskey combo. कॉम्बो पैक्स भी हैं इनके कॉकटेल मिक्सर बेसिकली मिक्सर्स है यार But ये only mixers, non-alcohol, right? non-alcohol yeah non-alcoholic Mixer. So you have mixers alcohol at non-alcohol home. it's like Jimmy's Right. cocktails जैसा ही है ये So I don't know if you remember last quarter, OB Cocktails got funded, right? That is a हाँ pre-mixed cocktail company. And I हम्म spoke to the founder also हम्म last month. हम्म I was trying to understand. So that brand is apparently doing well हम्म because what is working for them is that people like to taste their cocktail. They like to taste their cocktail, in a similar way. It's a very हम्म strong recall memory. हम्म What happens when people go to different places, order the same cocktail, it doesn't taste the same way because bartender is making it differently or whatever. हम्म They're not putting the right amount of ice, or they're, overdoing the mixer, or they're adding less alcohol, other things. So OB cocktail, in that sense, is doing well. Here, I think what they're already doing B2B, they have tested their mixers or no? I don't know. आई डोंट थिंक सो P2B के बारे में बात तो नहीं की है वेबसाइट तो B2C है इनकी पूरी की पूरी गिफ्ट बॉक्सेस है ना सर आई थिंक ये उनके उसमें जाएगा फॉर कॉर्पोरेट्स ये तो कॉर्पोरेट वाला है 2999 3999 but you're talking about B2B as into hotels No, I'm saying were they already selling mixers, not B2C, but do they have a customer base or people who have been consuming their mixers, right? So I'm thinking like a Viva story where you already do a kind of a B2B thing and then you come direct to customers. So that's what I was नहीं नहीं आई थिंक thinking. ये इनका डायरेक्टली B2C है इनके 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 फाउंडर की स्टोरी समझनी पड़ेगी इस चीज के लिए Hmm. But हाँ OB Cocktails is doing great, so look them up. I haven't tried because I don't drink, so I don't know. But people have told me uh, this one, yeah, हम्म OB is doing well. हाँ ऑफ कोर्स आई एम So I have ये these. इसमें आपको पैकेजिंग का कितना लगता है हाउ मच ऑफ अ रोल डज पैकेजिंग प्ले इन द सेल्स ऑफ दीस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स Identity distribution, both are key pillars, right? हम्म Which you need to get. So, and हम्म see, this is not a new category. This category has existed in US and Europe for about 20 years, 15, 20 years. So I remember when I was in college in US, there was a company called Four Loco, which was banned in US later on, that used to हम्म give pre-mixed coffee and alcohol in the same drink. हम्म It was very popular on campus, but it was later on banned by the US government because it had a upper and downer in the same. हाँ That market is there. That market will be there with for Gen Z and Gen Alpha. That's why I've been looking at this pre-mixed packaged. People want to consume, इंटरेस्टिंग people want तो to आगे consume the आगे same आप बोल taste. रहे हो इंडिया में मार्केट बड़ा होगा बड़ा होगा, बड़ा होगा. हम्म ये कंपनी को भी पैसे नहीं दिए गए दे बेसिकली आर मेकिंग शूज फॉर ग्रोइंग किड्स सो आई एम अज्यूमिंग कि इनका साइज बच्चे का पैर का बढ़ता है तो इसके पैर के बढ़ने के साथ साथ जूता भी थोड़ा फ्लेक्स करता है so that's the model but they didn't get a deal and I think fairly मैं भी नहीं डालता ये थोड़ा वो है this is a very innovative product लेकिन ये मास मार्केट में चलेगा नहीं ये बिकेगा नहीं बहुत मुश्किल है आप दिखा सकते हो तो एक नोवेल्टी फैक्टर रहेगी बट इट्स नॉट गोना सेल ओके मूविंग ऑन कलाकारम कलाकारम गॉट फंडेड बाय 3 people इट्स दीज आर DIY किट्स राइट सो नमिता थापड़ ने डाला पैसा अनुपम मित्तल ने डाला पैसा एंड पीयूष बंसल ने डाला पैसा अच्छा बिफोर दैट I think I missed this. Somebody in the chat. So you've had the record highest 15 people concurrent watching.
A lot of people have been chatting around on the chat. So I think we were discussing about the website being down. So somebody in the chat has suggested कि website is down after a Twitter banter. तो कुछ तो Twitter में मचा था इनके साथ ऑनलाइन से गए इसलिए the website is down. तो अच्छा founder name is also same. So people have been chatting. I'm sorry, I'm not used to people typing on chat, but it's a welcome change. Moving on. कलाकारम पे वापस आते हैं. So कलाकारम DIY बनाता है, क्या करता है भाई ये? कलाकारम unique and exciting DIY kits for all ages. बच्चों की तरफ ज्यादा फोकस्ड है 4, 7, 9, 11 and basically ये वही these are things with which people can play यार. It's as simple as that. ये मार्केट बहुत बड़ा है सर. ये मार्केट बहुत बड़ा है. जो आप किड्स मार्केट बोल रहे हो ना, इट्स ह्यूज. तो ये DIY किट्स अभी तो और अतरंगी चीजें चालू होंगी ना, बिकॉज नाउ वी एज पेरेंट्स हु हैव द स्पेंडिंग कैपेसिटी दैट आवर पेरेंट्स डिडंट हैव. हमारे पास तो वही 4 खिलौने थे. अभी वैरायटी देखो आप. ठीक है. मतलब जिस चीज के बारे में चाहिए उसमें आपको 100 चीजें मिलेंगी. प्लस आई थिंक पीपल आर गेटिंग इनटू द होल DIY तो खैर गलत है. ये तो बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजें हैं. ये आर्ट एंड क्राफ्ट वाले के ऊपर इन्होंने एक स्पिन डाला है. एंड आई एम श्योर दैट दिस पीपल मस्ट बी डूइंग रियली वेल. तो ये क्राफ्टिंग फन कलाकारम स्टाइल. सो दिस इज बेसिकली बेबी दिस थिंग. एंड द लास्ट कंपनी इज नाभी सूत्रा. ये एक और लेकर के आए हैं क्या, मतलब रैंडम. ये इन लोग इसके लिए डालते हैं क्या, फॉर फॉर ह्यूमर एलिमेंट. एक स्टार्टअप ऐसा डाल दिया, आयुर्वेदिक बेली बटन ऑयल. ह्यूमर एलिमेंट किसी को एक की बैंड बजानी है, दे विल गेट वन कंपनी. सो स्किन रिपेयर रिचुअल्स है, बेली बटन ऑयल्स दैट हील फ्रॉम विद इन, एंड विच ऑफ कोर्स हैड नो डील, बिकॉज अगर नमिता ने बोल दिया कि बकवास है तो और कोई तो डालेगा नहीं वैसे भी. सो विद दैट आई थिंक इनमें से कौन सा वाला स्टार्टअप आपको बेस्ट लगा, कुलमणि सर? हाँ, मेरे को तो ब्लिक्स सही लगा सर. ब्लिक्स इज द बेस्ट. Actually, I agree. Yeah. अरे सबसे बेकार कौन सा वाला लगा ये? वो तो let's flip the question. ये नाभि सूत्रा. But you know, alternative therapies is the fastest growing segment within healthcare, except really? managed healthcare. Except managed healthcare, because I'm working on healthcare right now, so that's why I'm telling. मैनेज हेल्थ केयर मतलब जो हॉस्पिटल और नर्सेज जहाँ पे लगते हैं. हाँ, तो वहां पे नहीं, सब so कुछ देयर इज नो स्कोप हाँ, फॉर इनोवेशन ना. हाँ, sorry, healthcare administration, not managed healthcare. So healthcare administration will be like hospitals outsource a lot of their functions to specialists. So let's say Jala Cygnus manages, let's say 100-bed hospitals in several cities. A company is an example. That's the same. गॉट इट. आकाश, कौन सा वाला सही लग रहा है आपको इसमें से? तेरे को पैसा डालना होगा, किसमें डालेगा? I think mostly Blex, but there's a reason why. Because I used to I had built the machine learning for Miko one actually. Do you guys know about Miko robot? हाँ, वो Yeah. वो हम्म. अच्छा, you are the one who Right, made it. so You're a Miko one, fan. I basically I was I think I think seventh or eighth employee in Miko. So I had Oh wow. built the I had worked on the back end of that. I had also built the first version of Miko one. So the natural language ये processing वाले ना. engine, recommendation engine. Yes, Yes. yes, yes. So Miko one is built by me. So I think so I understand. I mean this domain is it actually took them some time, but yeah. I mean this is very very interesting now, and with actually large language model, right, which is getting better and better. I think this could be really. I mean this Yeah, could I mean, really imagine basically pay off a now. toy Yeah, actually having a conversation with your child and growing exactly. with him. Now तो right, मतलब ये now it is possible. हम लोग बचपन में वो मूवी देखी है आपने, द गोल्डन कंपास, जिसमें उन हर एक का एक पेट होता है.
तो ये मेरे ख्याल से हम उसी Um, दुनिया की तरफ जा रहे हैं कि एक रहेगा हमारे पास। अभी क्या है, हम एक स्मार्टफोन लेके घूमते हैं, तब हमारे पास एक रहेगा जिसके साथ हम बात करेंगे। Yeah, I mean, Golden Compass is. I really like that movie. या सेकंड पार्ट नहीं बनाया लेकिन हम लोगों ने। आई वाज वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। इट वाज अ गुड मूवी। Yeah, so uh, there are few movies which came around that time, like the Golden Compass, Watchmen. I don't know if you oh remember yes, Watchmen. of course, I really like that movie। वो तो जैक स्नाइडर की थी ना। he actually that movie is one of the best representations of a graphic novel on screen। मतलब एकदम Uh, उठा के छाप दिया है भाई। I could watch that movie like I may have watched it like I don't know. Always like love those kind of movies. Underrated, the play, but superb. Yep। अमितोज सर, क्या लगता है किस में डालोगे पैसा अगर आपको डालना होगा तो? अमितोज देख सुन रहा है कि एएफके हो गया है ये? अमितोज इज एएफके। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी पास द टाइम, बट आई थिंक दिस वाज अ गुड सेशन यार। आई थिंक वी हर हफ्ते ना ये करना, आई थिंक जब तक शार्क टैंक चलता है, आई थिंक दिस एनालिसिस विल बी फन। एटलीस्ट दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि भाई क्या चल रहा है शार्क टैंक में। एंड आई कॉन्शियसली, मतलब दो चीजें होती है। एक तो यार of course the story of the founder does make an impact on the pitch and whether you eventually get funded or not, but I think not having that visibility and purely going by the product, if we are giving an analysis, then this is something which I don't think a lot of people are doing right now। मतलब बस प्रोडक्ट देख करके बताओ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट है कि नहीं, और अगर कोई यूएसपी है तो फिर क्या है। आई रियली लाइक दिस सेशन। क्या आपको कैसा लगा कुलमणि, दिस वेरिएशन? Good. I think for sure. I think I didn't know about the companies, but yeah, largely I agree with you that it's a very मैं क्या fundamental. करूंगा ना, मैं ना आपको ना लिस्ट पहले से दे दूंगा, आप देख के आना। आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। नहीं नहीं, बट आई रियली थिंक जब तक शार्क टैंक चलता है वी विल हैव अ शार्क टैंक सेक्शन, शार्क टैंक स्पेशल in each one of our weekly startup show, because भाई स्टार्टअप न्यूज में शार्क टैंक हो रहा है तो भाई दैट इज द बिगेस्ट न्यूज। एंड देन ऑफ कोर्स अगर पेटीएम जैसे और धमाके होते हैं तो वो तो कवर होते ही रहेंगे और फंडिंग न्यूज हमारी होती रहेगी। I think we got the high a record, around 15 to 18 people joined in। Thanks a lot, guys. 9 people are still watching right now concurrently। Please subscribe to our channel, show your support। We're trying to do a lot of great work here, and as you saw, I think Kulmani, if you guys don't know, Kulmani is the co-founder of Fibonacci X। They are both an iBanking and have an accelerator of their own। आकाश मैं आपकी करंट कंपनी का नाम बार बार भूल जाता हूँ। आपकी करंट कंपनी का नाम क्या है? it is Red Genix. क्या क्या क्या? Red Genix. Redgenix। So Akash is Redgenix ex Mastercard। He is our financial expert, and Amitoj is usually hangs around with us, not saying anything। With that, I think guys we will draw this episode to a close। If you really like, please leave a comment section below। अच्छा, मैं तो भूल ही गया, मैं निकल जा रहा था। I I think what we missed out on is the book of the week, the section that everybody watches out for, because this book of the week also leads to the giveaway। So today's book of the week is The Mom's Test। How many of you have read or heard of The Mom's Test? So The Mom's Test is a very पतली सी किताब है। ये किताब को बोला जाता है द डेफिनेटिव बुक फॉर मार्केट रिसर्च। अगर आप कंज्यूमर के पास जा रहे हैं और अगर आप मार्केट रिसर्च करने निकल रहे हो या फिर मार्केट वैलिडेशन करने के लिए निकल रहे हो, तो इस किताब में तरीके दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से सवाल पूछने चाहिए। दिस इज अ बुक विच इज फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ मार्केटियर्स, अ लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स, एंड दिस इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चनिंग योर users, right? So basically this book has been written by a guy called Drop Fitzpatrick,
Incidentally, Rob Fitzpatrick almost came to one of our podcasts in last year. We are still trying to get him. मिल गए तो पक्के से करेंगे. So this book basically provides valuable insights on how to effectively validate businesses ideas by talking to potential customers, right? So there are few key takeaways. One is ask about facts and not opinions. So focus on observable behavior and past experiences rather than hypothetical scenarios. So अगर कोई बोलता है हाँ मैं करता हूँ तो उसको बोलो कि लास्ट कब किया था और लास्ट जो किया था तो उस चीज को आप रिकाउंट करके आप मुझे दोबारा से बताइए सो देन इट बिकम्स कॉन्क्रीट सेकंड इज अवॉइड पिचिंग योर आइडिया नेवर पिच योर आइडिया व्हेन यू आर टॉकिंग टू कस्टमर्स अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट देन यू विल बी बायसिंग their problem this thing then third is talk to the right people so basically आपका जो TG है if you are building a product for a marketer and you go and ask a question to an HR person then those observations will have no those insights will have no implication on your product right so you have to be very clear about who you're asking questions to fourth is ask open-ended questions encourage conversations by asking questions that can't be answered by a simple yes or no this allows you to dwell deeper then beware of compliments अगर कोई बहुत पॉजिटिव बोल रहा है ना इसका मतलब he wants you to go away because people usually become polite to avoid confrontation वो डायरेक्टली आपको नहीं बोलना चाहते कि आप चले जाओ बोलते हैं हाँ सर बहुत अच्छा है जरूर इस्तेमाल करेंगे so never the moment that happens then you realize that you have made a mistake and you should move on then there is uh, build relationships for ongoing feedback so आपने जिससे भी बात करी है वो that is not your one and only conversation you should continue going back to them build relationships talk about the problem more तो वो और खुल करके धीरे धीरे आपके साथ बात करना चालू करेंगे तो आप अगर एक पूल बनाते हो 10-15 लोगों का उन 10-15 लोगों के पास आप बार बार एटलीस्ट 2 से 3 बार तो आप जाने की कोशिश करो then there is the understand the customer's world. So gain a deep understanding of the context in which your customers operate. This includes their workflows, pain points, and the alternatives they currently use to address their needs. And then there is the stay humble and open minded. So be willing to accept that your initial assumptions may be wrong. आप बहुत बार होता है कि आपको अगर किसी ने बुला रहा है यार ये नहीं चलेगा तो आप उसको कन्विंस करने के लिए बैठ जाते हो it doesn't matter what that person feels at the end of the day you should approach customer interviews with a learning attitude and you need to adapt your ideas based on the feedback you receive so this book is the book of the week this is one of the best books as I said if you're in the validation stage and we are giving this book out for a giveaway all you need to do is share this video and comment with your favorite section or your favorite thought which came while you were watching this. Alternatively, you can also talk about us on LinkedIn or Twitter, tag the Builders Club, and give a frank feedback about the show today. I'm sure that you people would have liked the show. In case you people want to, connect with us, you can find me on Twitter, on LinkedIn. I'm not that active on Instagram, so I think LinkedIn would be the best. You can just find Sohail Khan, the Builders Club. And with me, there is Kulmani from Fibonacci X. There is Akash. I've again forgotten your company's name. But we will see you guys again next week, same time, same place, again with funding news and startup and Shark Tank news because I think Shark Tank is gonna go on for some weeks. And please let us know how you liked this session this time around. Looking forward to having you guys or hosting you guys again next week. Till then, take care and good night. हाँ सर अच्छा गया है मतलब अराउंड